Good morning, students. Today we will start new poem in English, and title of the poem is Beauty. Beauty means Sundarta, and it is written by E. A. Shore. Now there is one famous line or famous quote: "Beauty lies in the eyes of the beholder." Meaning of this quote is beauty is everywhere. It just depends upon us how we observe the things. In this poem, poet is trying to say that everything is beautiful. Everything has its own importance and everything is unique in its own way. It's just how we observe the things. Okay, so beauty doesn't exist on its own way, but it is created by the observer. Okay, for me, like desert is beautiful, for someone else green garden is beautiful, or for other person even dried up tree is beautiful. So it depends upon us. It's not about fairness or darkness, but it is about your good thoughts and good deeds. Okay? Now we will see meanings of this poem. First is harvest. Harvest means to produce, कोई चीज बनाना, produce करना. Chanting means to make melodic sounds, sweet sounds, और जो sounds सुनने हमें बहुत अच्छा लगे वैसे sounds. And deeds means actions. To carry out what you do, that is deed. Now we will read this poem. Now children, let's read this poem. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people walking or dancing for their harvest. Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. Beauty is in yourself. Good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. Children, in the first stanza, poet is saying that you can see beauty everywhere. आपको beauty मतलब सुंदरता, आपको हर जगह सुंदरता दिख सकती है. Like in the sunlight, सूरज की रोशनी में, trees में, birds में. जब आप birds को देखते हो when they fly in the sky, it gives so pleasure to our eyes, right? हमें वो देख के बहुत खुशी महसूस होती है, मतलब हमारा जो दिल है वो खुश हो जाता है. Then corn growing, मतलब जब आप बहुत सारे खेत देखते हो, fields देखते हो, and people walking in this field, all these things are beauty, or dancing for their harvest. What is harvest? Harvest is a time when farmer cut the crop and then they sell in the market. Okay, so here they dance for the harvest. Why they dance? Because now they know that they will be paid for their hard work. Okay, so all these things are included in beauty. आपको जो beauty है वो हर जगह दिख सकती है. जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है, जो चीज़ आप देख के खुश हो रहे हो, all these things are beauty. Actually ये सारी चीज़ें सुंदरता है. Okay, it's not only about face. बाहरी दिखावा ही खाली beauty नहीं होती है. आपको कोई भी नेचुरल थिंग्स है, आप कोई इंसान को काम करते हुए देख रहे हो, all these things are beauty. Second stanza, poet is saying that beauty is a thing to be felt. It can be heard means one can listen to it. Like one can hear its sound when night falls, when the wind blows and creates a sound, when rain falls on the earth, when a singer sings. So all these things are beauty. तो पोइट कहते हैं यहाँ पे कि जो ब्यूटी है वो सिर्फ दिखाई नहीं देती, तुम उसे फील भी कर सकते हो. लाइक रेन फॉलिंग, जब बारिश गिरती है तो जो उसकी आवाज़ होती है वो हमें कितनी सूदिंग लगती है, हमें वो देख के कितनी खुशी होती है. लाइक आवर माइंड इज़ रिलैक्सड व्हेन वी सी रेन फॉलिंग और अ सिंगर चैंटिंग. अगर कोई सिंगर है वो बहुत ही स्वीटली कोई सॉन्ग गा रहा है एकदम मेलोडियस वॉइस में, तो वो सुन के हमारा जो हार्ट है वो बहुत खुश हो जाता है. सिमिलरली नाइट ब्यूटी जो है वो आपको रात को भी दिख सकती है, जब बिकॉज वी नो दैट एट नाइट एवरीथिंग इज़ एट रेस्ट, सो यू कैन इवन हियर द साउंड ऑफ विंड ऑल्सो, ओके, एट नाइट, और इवन साउंड ऑफ सम इंसेक्ट्स. सो दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटी. आपको ब्यूटी हर बार दिखाई नहीं देती, आप उसे फील भी कर सकते हो, राइट? In the last stanza, poet is saying that beauty is in yourself. Good deeds, happy thoughts that repeat themselves. लास्ट stanza में पोइट कहते हैं कि जो ब्यूटी है वो तुम्हारे खुद के अंदर है. गुड डीड्स मतलब अगर तुम कोई अच्छे काम करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटी. हैप्पी थॉट्स मतलब अच्छे विचार आना भी एक ब्यूटी है.
that repeat themselves in your dreams. और यही सारे अच्छे काम, अच्छे थॉट्स आपके सपनों में भी आते हैं, आप अपने काम में भी अच्छे विचार रखते हो. एंड इवन इन योर रेस्ट, इवन जब आप रेस्ट कर रहे हो, मतलब जब आप आराम कर रहे हो, at that time also you are thinking good for others and you are not selfish. Okay, good deeds means you think about others, like you donate something or you help someone, so all these are good deeds. Okay, so ये सब सुंदरता है. ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ. जो ब्यूटी है वो इनर ब्यूटी होती है, ना कि बाहरी दिखावा जो होता है, दैट इज़ नॉट ब्यूटी. आप अंदर से कितने प्योर हो, अंदर से आपका कैरेक्टर कैसा है, that is beauty. Okay, so children, here we had completed this poem and I hope you loved this poem. There was a sweet message also from this poem, that you should think big, that beauty is everywhere. It is in yourself also. It is not only about looks. Okay, so goodbye, take care, Jai Hind.